Okay. Now that we have understood the concept of both the statements, let's move on to making the actual fund flow statement. Before getting into it, let's understand the format of the statement. On one hand, we have sources of funds, on the other, we have application of funds. Sources meaning बहुत ही simple है, as the name suggests, this is your source of finance, right? बिजनेस के पास किस तरीके से पैसे आते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, ओके? बहुत सिंपल भाषा में, when you issue your share capital, आप shares issue कर रहे हैं, the company is receiving money in return to run its business, right? Similar is the case with debentures. Same is the case with long term borrowing. जब आप लोन लेते हैं तो क्या होता है, कंपनी के पास लोन से पैसे आ जाते हैं टू बेसिकली डू इट्स बिजनेस, राइट? जब आप असेट बेचते हो, व्हेन यू सेल अ फिक्स्ड असेट, अगेन आप असेट बेच रहे हैं, आपकी कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ऑन द अदर हैंड वी हैव एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, विच इज़ बेसिकली कि आप ये जो फाइनेंस आपके पास आया है कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, ओके? सो यू हैव थिंग्स लाइक रिडेम्पशन ऑफ योर प्रेफरेंस शेयर्स, यू हैव रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. बेसिकली एक फिक्स पीरियड के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये पैसे वापस करने पड़ते हैं, राइट? देन यू हैव रीपेमेंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. देन यू हैव परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट. जब परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, पैसे देते हैं, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारे हैं आपके एप्लीकेशन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, in the statements that we had studied, if there's an increase in working capital, that means you are applying your funds. Daily business करने के लिए आपको पैसे लग रहे हैं, तो that is application side में आप लिखेंगे उसको. Whereas if there's decrease in working capital, यानी कि आपको कम पैसे लग रहे हैं, पैसे बच रहे हैं, तो there's increase in the sources, right? Apart from that, whatever we studied about funds from operation, if there is fund flow, that is trading profits, profits from your operations, तो उसको आप sources of funds में लिखेंगे. Whereas if there is some loss, उसको आप कहाँ पे लिखेंगे, application of funds, right? So this was all about your say format. Now let's quickly understand this particular statement through a question, okay? So for the practical sake, we are referring to question number 25. You can turn to page 215. ठीक है, ये वाला सॉल्व करके देखते हैं. Now if you carefully observe the question, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई है. They have given you a data of the year 2009 and 2010. Now the first step that you do is that you try to identify कि कौन सी आइटम कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट में जाएगी, right? So like they've given share capital, profit and loss, current liabilities. You try to gauge कि ये सारी चीज़ें कौन से स्टेटमेंट में आपको लिखनी है, right? So share capital basically goes in the main statement, आपका fund flow statement. Profit and loss account is basically used for funds from operations. Current liability goes to the working capital statement. Again, goodwill will go to funds from operation statement, plant and machinery will go to your fund flow statement, and current assets will go to your working capital statement. Okay? तो इस तरीके से when you identify, now you know कि कौन सी statement में कौन सा amount जाना है. Plus, what you do is you mark the additional information. तो जहाँ पे भी specific additional information दी गई है relating to that particular account, put a star mark, because वो जो additional information है उसकी double entry होती है, right? Okay. After you have completed this process, you go on ahead and make a statement of changes in working capital. The format remains the same. हम क्या कर रहे हैं, current assets note down कर रहे हैं, current liabilities note down कर रहे हैं, and उसमें फिर क्या कर रहे हैं, we are trying to gauge कि अगर एक current asset बढ़ा है तो इसका effect working capital पे क्या हुआ है, right? So increase in current assets, increase in working capital, decrease in current assets, decrease in working capital. Similarly, if a current liability amount has increased, the working capital will decrease, correct? And if the current liabilities amount decreases, the working capital will increase. इसी manner में आप increase decrease ascertain करके you will find out कि आपका कितना amount net increase हुआ है या decrease हुआ है. Okay? Now once you have completed that statement, the current liabilities and current assets amount is out of play now. Then you move on to making your actual fund flow statement, right? अब देखो, पहला वाला आइटम हमने क्या दिया हुआ था बैलेंस शीट में,
हमारा दिया था शेयर कैपिटल. नाउ इफ यू सी शेयर कैपिटल हैज इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000. दैट मीन्स व्हाट, दैट देयर हैज बीन इशू ऑफ शेयर कैपिटल. अब जब भी आप शेयर कैपिटल इशू करते हो तो क्या होता है, नेचुरली कंपनी के पास पैसे आते हैं, तो दिस अमाउंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लिख देंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट. नाउ द नेक्स्ट आइटम दैट वी हैव इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. सो यू टेक द क्लोजिंग बैलेंस, द नेट प्रॉफिट. नाउ we are going to add the non-fund non-operating expenses that we have already deducted. Now come to the asset side, you will see goodwill. Goodwill का amount notice करो, 2009 में 30,000 था and 2010 में 25 हो गया. ठीक है, that means there's a reduction in the amount, which basically means that we have goodwill written off. ठीक है, तो दिस इज एन एक्सपेंस जो कि हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से कम कर देते हैं. बट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फ्रॉम आर ऑपरेशंस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको वापस ऐड बैक कर देंगे. ठीक है, देन इफ यू सी वी हैव प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है. क्या बोल रहे हैं वो, डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस इट इज़ बेटर दैट यू मेक एन अकाउंट. तो उसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 60, क्लोजिंग 50, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 20,000. बैलेंस आपका जो बचता है डेबिट साइड, इट बिकम्स व्हाट, योर परचेज ऑफ मशीनरी, विच इज शोन वेयर, योर फंड फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेशन साइड, राइट. जब भी आप मशीनरी परचेज करते हो तो आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे. क्या आपने पैसे अप्लाई किए, नेचुरली खर्च किए पैसे, तभी मशीनरी खरीदी, राइट. सो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स योर एप्लीकेशन. The depreciation goes to funds from operation statement, right, where we are adding it back to the profit. Why? Because ये ऐसा expense है जो कि क्या है, नॉन ऑपरेशनल कंसिडर किया गया है, नॉन फंड नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, जो कि आप नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करते हो, बट एक्चुअली करना था क्या, नहीं. वाई? बिकॉज वी आर असर्टनिंग योर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, then the next point in your additional information is given as dividends of 12,000 were paid during the year. Again, किससे पे करते हैं dividends? We pay them from the profits. Now when we pay them from the profits, they are not actually my operating expenses. Okay, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस add back कर देंगे. And then lastly you deduct the opening balance and you get your net funds from operation. Now because this is a positive amount, this is your funds that you have earned from your operations. अगर यहाँ पे लॉस आता तो क्या करते, नेचुरली उसको एप्लीकेशन में लिखते, बट ये क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो कहाँ लिख रहे हैं इसको, सोर्सेज ऑफ फंड्स बन जाएगा. ओके, एंड देन डिविडेंड की जो आपकी एंट्री है, because it's given as an additional information, we have to show the double effect of it, right. So this will also be recorded in the applications column. ठीक है, lastly you will mention the amount of your working capital. Now since there is increase in working capital, what will happen, you will have to write it in the application side. And once you have mentioned that amount in your fund flow statement, you will notice that your fund flow statement tallies, right. So this was all about fund flow statements.